Hello friends, welcome to my monologue. Here I will talk about one important event. अभी GDP के numbers आए. It was 8.2% and it is very good numbers actually. People were not expecting these numbers. उसके various reasons हैं. अगर आप देखो तो last year और last 1-2 years से there is continuously in the social media and main media the jobs are going. There are no new jobs, especially in IT. There is all everywhere there is news that in IT there are no jobs, no new jobs. This is, I think, this news is just very hyped. There is still jobs, people are getting the jobs, people are doing the jobs in IT, and it is a long way to go to see the hype. और फिर दूसरा इंडिकेटर है रियल एस्टेट, जो लोग डिराइव करते हैं कि जब जॉब ही नहीं है तो रियल एस्टेट भी बहुत डिप्रेस्ड है, बट ऐसा है नहीं. इट इज़ ऑल गोइंग ओके. एंड देन तीसरा बहुत बड़ा इंडिकेटर जो लोगों को लगता है, जो निफ्टी वगैरह को ट्रैक करते हैं, अगर आप देखो तो निफ्टी लास्ट 1 ईयर में उसी रेंज पे रही है. आज भी अभी भी जो निफ्टी का हाई है वो 26,000 है. 14 मंथ्स बिफोर मीन्स 2024 अक्टूबर में भी शायद 26 के आसपास थी. तो इन 2-3 चीज़ों से लोगों को लगता है कि जो सोशल ये जो मार्केट है, इकॉनमी है, वो बहुत नीचे जा रही है. इट इज़ ऑल ग्लूमी, इट इज़ ऑल डिप्रेस्ड, and this is more in the social media, but reality looks like little different, that is still it is going okay. And these hypes about the these are not really hype. These things are very useful as all we know, but too much hype, like there won't be any job within next 2 year or next 5 year, it looks too much. This is too much actually.